सो ज्योमेट्री का हम डायरेक्ट यूज़ ना भी करें लाइफ में, लेकिन हमारे ब्रेन की रीजनिंग स्किल तो डेफिनेटली इम्प्रूव करता है. सो टुडे वी विल अनपैक द रिलेशनशिप बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ लीनियर पेयर. बट फॉर दैट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लीनियर पेयर क्या होता है. सो एक लाइन ली और लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से एक और पॉइंट तक एक रे बनाई. सो रे सी डी. ओके, एंड ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. सो इफ यू नोटिस दिस फॉर्म्स अ शेप लाइक अ टी, अल्फाबेट टी. ओके, एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 degree. नाउ वी आर बाइसेक्टिंग दिस पर्पल एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. आधा आधा बांट दिया. ऑलराइट, एंड लाइकवाइज red angle also has been bisected into two equal parts by this green line CE. Now we are interested in knowing as to how much is this angle plus this angle. So basically the sum of the purple angle here and the sum of the red angle over here. Now to understand this better, let us see this Excel data. So these two angles have been captured over here. So if I change this, this also changes. Please observe. When I move this point D, these two angles are changing. However, this sum continues to be 90. Implies इन दोनों पर्पल एंगल का और रेड एंगल का अपना मेजर जो भी हो, लेकिन सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 degree. So that is something interesting to note over here. Furthermore, we will see if I need to prove this without these measurements. So how do we do that? Now obviously मैं इनके इतने सारे measures तो नहीं ले सकती. Different measures over here. Okay, there are so many possibilities of the measurements of this purple angle and the red angle. So what we are doing is we are denoting these equal angles, purple angles, as x each, and these two red angles as y each. So total purple angle will be equal to x plus x, which is 2x, and total sum of these red angles will be y plus y equal to 2y. However, if you will notice over here कि ये जो ACB है ये एक straight line थी. Hence, the sum of these four angles, which is forming like a semicircle over here, is x plus x, which is 2x, y plus y, which is 2y, and this will be equal to 180 degree because ये एक semicircle भी बन रहा है और ये sum of two linear pair भी है. दो linear, एक linear pair का sum भी है. Now if you notice over here, there is a 2 here, a 2 here, and 180 भी एक even number है. So if I divide this entire linear equation by 2, every term by 2, so 2x का आधा x, 2y का आधा y, 180 का आधा 90. So x plus y is equal to 90. Now if you notice over here, if I take this x and this y, this is actually forming an angle between this angle bisector and this angle bisector. So it's forming angle FCE, which is coming equal to 90 degree. So we understand from here that no matter what is the individual, value of this x or y, but their sum will always be 90 degree. So we are able to establish through this reasoning over here that CF will always be perpendicular to CE. That means ये जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, जो लीनियर पेयर के एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे. I hope this helped you. Please like, share and subscribe. Thank you.